Make sure you watch this video till the end because there I'll show you how the final lehenga turned out and how I styled it. Hi guys, my name is Deekshita and welcome to my channel. If you're seeing this face for the very first time, then please make sure that you subscribe. So I am back with a new video and today's video is gonna be super different. So back in February, I decided to make a lehenga out of one of my mom's old sari, and I documented the entire process of me doing it. Well, not me doing it, obviously the tailor bhaiya did it, but I documented all the steps that I went through for the final result. And मैं obviously आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है अब, like how the lehenga is looking. So yes, I'm super excited about that. Now as I said कि सब मैंने February में कर लिया था, but then the pandemic happened and I did not upload the video because I thought what's the use of it. But now I think since our lives are getting back to the new normal, I think it's time to upload the video. बहुत postpone कर दिया मैंने, and maybe it will be useful for you or you'll just enjoy the video. So yes, that's what this video is gonna be all about. I hope you like it, and without wasting more of your time, let's just get started. Now I'll start with telling you about the sari a little bit first. Now it was this really beautiful red and wine sari. It had a ombre of red going down to wine color. बहुत ब्यूटीफुल साड़ी थी. Actually I bought it as a gift for my mother, I think a couple of years back, and it had a very big and heavy border नीचे से gold color का. Now the only reason why I decided to choose this sari was because my mother was not using it, because उसका जो border है वो इतना ज़्यादा heavy था कि it was so difficult to wear it. Like I was buying sari for the first time, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं बताती back when I got it, and when I gave it to her, she told me कि उसका border बहुत heavy है, तो उसका ना पल्लू वगैरह नहीं बन पाता because it just weighs it down so much. एंड ऊपर जो इसका जो फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत फ्लोई और लाइट फैब्रिक था. तो लाइट फैब्रिक प्लस हेवी बॉर्डर इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, एंड आई डिड नॉट न्यू इट अर्लियर. सो वो कुछ यूज नहीं होती सारी, सो आई डिसाइडेड टू यूज दैट सिंस आई लव वाइन कलर इन माई इंडियन एथनिक वेयर. मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक रेड और वाइन कलर के जो भी लहंगा और साड़ीज होती है वो इतनी ब्यूटिफुल लगती हैं. सो आई डिसाइडेड टू चूज दैट वन स्पेसिफिकली. So this is what the sari looks like. I forgot to take a good before picture, so please just इसी shot से थोड़ा सा देख लो कि ये कैसी लग रही है. It's just plain all over with this heavy border all over it. पल्लू में ऐसा कुछ different नहीं है, सिर्फ वही border लगा है. And yes, so this is what sari looks like. Now the second step was to see what the lehenga will look like and design it and everything. So I had a little bit of reference in my mind. मुझे पता था मुझे किस टाइप की चीज़ें चाहिए उसमें. And then I went to the tailor bhaiya where I usually go. So I live in Haldwani in Uttarakhand, and there's this tailor called Fashion, like a store called Fashion Boutique है. वो काफ़ी अच्छी stitching वगैरह करता है if anyone's from here or around here. So yes, that's where I went. So I had this image in my mind where I wanted something जिसका घेर बहुत ज़्यादा हो. Now you can go through Pinterest. Pinterest में आपको इतने cute blouse के designs मिल जाएंगे. So obviously लहंगा तो एक certain type का ही होता है, बस वो कम घेर ज़्यादा घेर आप अपने हिसाब से customize कर सकते हो. But blouse में you've got so much opportunity. So while we were deciding the look of the lehenga, he asked me if I wanted the blouse to be of the same color or of a different color, like मतलब कुछ contrast में चाहिए या फिर दोनों same चाहिए. Now I really like monochrome lehengas a lot, and मैंने Pinterest में भी बहुत ज़्यादा देखा था, and मुझे monochrome बहुत पसंद आ रहे थे. So I went for the same fabric in the blouse and the the skirt part. बहुत sorry, I forgot what it's called. So मैंने same fabric चाहिए था for both those pieces, and since साड़ी काफ़ी लंबी होती है तो same साड़ी से दोनों pieces बन चुके थे. That was amazing. We decided on the design. हमने पूरा देखा कि क्या कैसे होगा, and this is the footage of us doing that. And then he took all my measurements. Then I told him कि take his sweet time, but I want the lehenga to look good because I was in no hurry. मुझे किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए नहीं चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा पहले ही बनवा ले रही थी ताकि अगर टाइम भी लग जाए तो टाइम लगे, बट आई वांट द फाइनल प्रोडक्ट टू लुक गुड. So that's what happened, and he asked me to come back. I think
एक आध महीने बाद एंड फॉर द फर्स्ट ट्रायल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स 12:15 राइट नाउ और जो लहंगा मैंने स्टिच करने को दिया था इट्स रेडी आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ। तो 1 महीना लगा उसको तैयार करने के लिए एंड अभी मैं टेलर भैया के वहाँ जा रही हूँ जस्ट टू सी कि उसका फिटिंग कैसा आ रहा है, कोई चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं। सो लेट्स गो एंड सी हाउ इट टर्न्ड आउट। तो दिस इज द आउटफिट ऑफ द डे। आई एम वेयरिंग दीज वेरी कंफर्टेबल पजामा ट्राउजर्स काइंड ऑफ थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम मैक्स बिकॉज ऑब्वियसली मुझे चेंज करना है तो मैं सबसे कंफर्टेबल क्लोथिंग में ही जाना चाहती हूँ। देन आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम Shein. Then I'm wearing this denim jacket on top of it because the weather outside today is very gloomy. बहुत बारिश हो रही है रात से और वापस से ठंडा हो चुका है, so मतलब it's a little chilly. So I'm wearing this denim jacket and then I'm wearing my white Adidas and these yellow socks because you know like for more pop of color to my look. So this is the fit of the day and yeah, now let's get going. It seems like a whole different world उस टाइम पे pandemic के पहले. So I went there for the trial now. Now when I was trying on the lehenga and the blouse part, I realized that there were some problems in it. So first of all, the fabric of that sari, as I told you before, was very flowy and it was so difficult to stitch on. It's like stitching on water. Now lehenga में the first thing that he missed was कि उन्होंने can नहीं लगाया था. Well, not missed, he did it deliberately. He told me कि एक बार without can try कर लो. If you still don't like it, then I'll put on the can later. So I tried it without the can. Here you can see in the footage and because of that heavy border of that sari, जो लहंगा था वो इतना ज़्यादा वे डाउन हो चुका था. So it was like very droopy and that was not the look I was going for. I was very specific in my mind and in telling him कि मुझे लहंगे में घेर तो डेफिनेटली चाहिए, लाइक कोई एम्पायर जो वेस्ट लाइन टाइप का लुक होता है, नीचे से पूरा स्ट्रक्चर्ड सा काफ़ी से ना घेर टाइप का आना चाहिए. So first of all, because of that fabric of the sari and the heaviness of the border, वो पहले ही थोड़ा सा लग रहा था कि वो उतना शायद नहीं आ पाए. And then can भी नहीं लगा था. So the first change that we did was I asked him to put on can on it ताकि can से ना नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए and लहंगा उतना वे डाउन ना हो. So that was the first change and the only change actually. So this is what the blouse looks like. Now blouse में सब कुछ सही था. I wanted it like this because मुझे border को यहाँ पे use करना था, इसलिए I didn't go for it being sleeveless. And yes, but the only problem is I don't know how, but जब उन्होंने measurement लिया उन्होंने जो ये लेंथ है इसको बहुत लंबा कर दिया था. I wanted it cropped. I like cropped blouses more. So that was a bummer. तो जब मैंने ट्राई किया तो वो obviously काफ़ी लंबा था and I told him but this could not be restitched first of all क्योंकि इसमें पीछे बॉर्डर लग चुका था and also इसका जो फैब्रिक है it's so difficult to stitch. He told me कि अगर वो इसको वापस छोटा करेंगे तो चांसेस है कि ये फट जाए पूरा. So I had to do with it. That was the only compromise I made कि ठीक है अब इसका लेंथ थोड़ा लंबा है but I thought कि ठीक है I'll manage somehow. So yeah, this is the blouse design. Picture it has this huge keyhole here. So now yes, this was our first trial. I told him to make all the changes and I'll come later to try it for the second time. Tell me why you wanna end. Was he really just a friend? No sign. Now while trying on the lehenga, after the can we realized that now it's holding its structure properly and अब वो जो घेर मुझे चाहिए था it came out all so perfectly and I loved that. So finally can ने उसको वो जो इतना वे डाउन हो था उसको पूरा सपोर्ट दिया ताकि वो उतना ना नीचे को बिल्कुल ड्रूप ना हो जाए एंड काफ़ी अच्छे से घेर बन रहा था एंड आई वॉज लविंग इट. So yes, finally I was done with this entire process. लहंगा बन चुका था. Took me a couple of trials, but I think अगर इस टाइप की चीज़ आप बनाना चाहो घर पे तो आपको 1-2 ट्रायल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही. You'll have to see 1-2 changes यहाँ वहाँ करने का. Now I wanted the entire red to wine वाला ombre मुझे पूरा चाहिए था, इसलिए लहंगा थोड़ा लंबा बना है बिकॉज हमने वो जो साड़ी है उसको कहीं से भी कट नहीं किया, उसकी पूरी लेंथ यूज़ करी है. So the lehenga is a little longer.
नाउ स्पीकिंग अबाउट दैट स्कर्ट, दिस इज द स्कर्ट लुक्स लाइक. इसमें पूरा ऊपर से रेड से वाइन का जो ट्रांजिशन जाता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. दीज आर टू ऑफ माई फेवरेट कलर्स फॉर इंडियन एथनिक वेयर एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई यूज दिस साड़ी पर्टिकुलरली. फॉर द वेस्ट वाला पार्ट उन्होंने उसमें नाड़ा लगाया है सो दैट आई कैन एडजस्टेड, मतलब वो जो सेट टाइप का होता है, एंड उसमें एक चेन है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आई वेंट टू द मार्केट एंड गॉट अ कपल ऑफ दीज you know what are these called, I don't know, it's जो भी होता है ये जो ब्लाउज में से स्टिच करते हैं. So I got them in red color because this has ombre of red and wine. Now as I earlier said कि ये monochrome look मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने दोनों पीसेस सेम रखे. एंड देन फॉर द कंट्रास्टिंग पीस मैं इसमें दुपट्टा ऐड करूंगी टू स्टाइल इट थोड़ा सा डिफरेंटली. नाउ फॉर द दुपट्टा आई डेफिनेटली गो फॉर समथिंग इन गोल्ड because it has different hints of like different shades of gold here, light और फिर copper टाइप का, किसी भी टाइप का दुपट्टा I can use with it. So मेरे पास घर में जो भी golden दुपट्टा पड़ा है I'll definitely use that one only. Like I won't buy something new for it because what's the use of it, क्योंकि already घर पे है golden दुपट्टास. So yes, this is the final lehenga. This is how it turned out and now I'll show you how I styled it. Wait, what's your name again? Wayne? Just another night, I was feeling fine. Insane playing bye. Then we finally kissed, I was like, oh shit. Boy, I had to try, I can't even lie. Didn't really think you changed my mind. But what can you do? I guess I needed to. Yeah. I'm feeling really into you. It's not like I wanted to, but I just wanna be with you tonight. You were like hello, and I was like oh no. I'm used to flying solo. I'm in trouble now. Now I'm singing like ooh la 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 la. Ooh la 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 la. No, I don't wanna fight what I feel. For the first time it feels so real. Take a part of me. Take my heart, make it ours, we can let it be. Hold me in your arms and make me feel like I'm the only one. 'Cause I just need to be with you tonight. So yes, with this we come to the end of this video. I hope you enjoyed watching it. आपको कुछ different content लगाओ and if you also want to do something like this, then I hope this will turn out useful for you. And yes, that's it. If you like this video, then give it a big fat thumbs up and do not forget to subscribe to my channel. Click on this red button to subscribe and then click on the bell sign too. This is my Instagram handle right here. Make sure you're following me on my Instagram and also tell me in the comments कि आपको ये लहंगा कैसा लगा. How according to you, how did it turn out and how is it looking on me? और ये अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ऑल्सो रिमेंबर दैट आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी मंडे एंड थर्सडे एट 11 AM. सो मंडे थर्सडे 11 AM चैनल पे ज़रूर आना. आई वुड लव टू मीट यू एंड नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप स्माइलिंग. बाय.